Welcome, dear learners, to the FaroFocus, where guidance and precision leads to your growth. We were on a NEET biology lecture series, जहाँ मैं आपका biology educator और हम आप डील कर रहे थे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से. और before we begin, let us have a quick review what all things we learned in the last lecture. So we focused on what actually is reproduction, why organisms reproduce, what are the two kinds of reproduction, and later on we focused that sexual reproduction was relatively more advanced in terms of evolution than asexual reproduction. Why so? Because sexual reproduction introduces variations in the organisms, and these variations may allow for adaptive advantage, and hence it is more advanced than asexual reproduction. Now we should move forward in today's lecture dealing with the features of human reproduction and other details. So in human reproduction, what we will be learning at first, we will be focusing upon the features of human reproduction. फीचर्स की जब बात आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो है वो क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल का मतलब है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दो सेपरेट एनिमल बॉडीज़ में होंगे. जिस एनिमल की बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे उसे हम मेल कहेंगे, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे उसे हम फीमेल कहते हैं. ये कंडीशन ही क्या थी? डायोशियस कंडीशन. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एल थिंग्स वी कैन से? ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो सेक्शुअली डायमॉर्फिक. व्हेन वी से सेक्शुअली डायमॉर्फिक मतलब दो अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म से जो एक्सटर्नली विजिबल कैरेक्टर्स के बेसिस पर डिस्टिंग्विश हो सकते हैं. व्हाट आर दोज टू externally visible two forms, male and female, two dimorphics, okay, two morphological forms. Third important feature, human beings are viviparous. Viviparous का मतलब है they give birth to young ones. What they do? They give birth to young ones. Another important point, human beings are sexually reproducing. Okay, what they are? Sexually reproducing or animals, and these animals show internal fertilization. Human beings shows what? Humans show internal fertilization. Internal fertilization का मतलब है कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, यूजुअली द फैलोपियन ट्यूब वेयर वी विल बी टॉकिंग ऑफ. इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. एंड यहाँ पर डायरेक्ट और इंटरनल डेवलपमेंट है. सो वी से देयर इज डायरेक्ट एंड इंटरनल डेवलपमेंट. डायरेक्ट इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी लार्वल फॉर्म इन्वॉल्व नहीं है. इंटरनल डेवलपमेंट इसीलिए क्योंकि फीमेल की बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट की प्रोसेस होनी है. पूरा का पूरा ही जो जाइगोट से एम्ब्रियो और फिर यंग वन बनने की प्रोसेस है, इट ऑल टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इन हर यूटरस विच वी कॉल इन जनरल टर्म्स एज वोम. इसीलिए इंटरनल डेवलपमेंट. एंड लास्टली बट नॉट द थिंग दैट वी मस्ट फेल टू लर्न, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन्स डू शो पेरेंटल केयर. दे फीड देयर चिल्ड्रन and they take care of them until they are sufficient enough to do their jobs independently. That is why they show parental care. We say human beings show what? Parental care. Let me mark these pointers as the important features of human reproduction that nobody should fail to learn. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And one more thing, if you want to write, human beings are placental mammals, इसीलिए वो placenta formation भी show करते हैं. Just in case we have basically divided these, so human beings are having these many basic features. Now we have to understand what are the events of sexual reproduction in human beings. What we will be learning, events of sexual reproduction in human beings. When we say events of sexual reproduction in human beings, so since human beings are showing sexual reproduction,
सो दे हैव फर्टिलाइजेशन एज द की इवेंट इन इट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने लास्ट लेक्चर में जाना था, फर्टिलाइजेशन एक बड़ा ही की इवेंट है, तो उसके इर्द गिर्द ही हम सारे इवेंट्स को स्टडी कर सकते हैं। कैसे? वी कैन डिवाइड द इवेंट्स एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाले इवेंट्स। इसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, देन एट लास्ट यू विल ऑब्जर्व पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले इवेंट्स। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट फीचर दैट यू मस्ट फोकस, अगर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो उसमें क्या होगा, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा। सिंपली स्पीकिंग, मैं अगर यहाँ पे इन शॉर्ट बताने की कोशिश करूँ तो वी विल स्टार्ट विथ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। किससे हम शुरू करेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से हम लोग शुरुआत करते हैं। When it comes to pre-fertilization events, students, you will first observe formation of gametes. That is called as what? Gametogenesis. What it is called as? Gametogenesis. And even before that, if you want to study it in more detail, we can also put that thing कि पहले human being sexually mature होगा, तो we can put here puberty, attainment of sexual maturity. Okay, so what puberty is? Attainment of sexual or reproductive maturity. At first this happens. Once the humans are sexually mature, they may produce gametes now. So the second step is what? Gametogenesis. So we can write it as what, or describe it, process of formation of gametes, process of formation of gametes. तीसरा इम्पॉर्टेंट इवेंट हम जाने उसके पहले एक और चीज़ जाने, गैमीट्स जो है दो तरीके के हैं। सो दो तरीके के गैमीट्स बन रहे हैं, तो गैमेटोजेनेसिस भी दो तरीके का हो जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, एंड oogenesis, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। मतलब मेल्स के अंदर होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, बड़ा वेग तरीके से हम लिख रहे हैं, आगे इसे डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। और दूसरा है oogenesis, विच इज़ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। अब एक बार ये गैमीट्स बन गए हैं, उसे ट्रांसपोर्ट करना होगा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पर, सो दैट इज़ कॉल्ड एज गैमीट ट्रांसफ़र। सो गैमीट ट्रांसफ़र इज़ व्हाट? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और अगर हम इंसानों के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है? फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है। उसमें भी कहाँ? फैलोपियन ट्यूब की एम्पुलरी रीजन में, दैट इज एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इन ह्यूमंस। और ह्यूमंस में भी किस में? इन ह्यूमन फीमेल्स। ओके, फीमेल के लिए सिंबल यूज़ कर लिया है हमने। अब ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक गैमीट तो करना नहीं है, मेल गैमीट भी ट्रांसपोर्ट करना है और फीमेल गैमीट भी ट्रांसपोर्ट करना है। सो लेट अस डिवाइड दिस थिंग एंड देन वी विल बी फोकसिंग इट। सो लाइक दिस वी कैन डिवाइड। सो गैमीट ट्रांसफ़र में एक तरफ हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट, दैट इज स्पर्म्स, और दूसरी तरफ हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फीमेल गैमीट, दैट इज ओवम। पहले फीमेल गैमीट की ट्रांसपोर्टेशन की बात अगर कर ले तो इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी टू डिस्क्राइब। फीमेल गैमीट बनता है ओवरीज में, उसे फैलोपियन ट्यूब कैप्चर करती है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, और वो फैलोपियन ट्यूब में मौजूद सीलियरी जो एपिथीलियम है, सीलिएटेड एपिथीलियम जो है, उस सीलिया की बीटिंग से जाएगा और साथ में फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी के कारण वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सो हम लिखते हैं क्या? बाय सीलियरी मूवमेंट्स ऑफ सीलिएटेड एपिथीलियम ऑफ ओविडक्ट्स या लाइनिंग ओविडक्ट्स, और दूसरा
by motility of fallopian tube. मोटिलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट की मोटिलिटी क्यों आती है? ड्यू टू स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। किसके कॉन्ट्रैक्शन से होगा? स्मूथ मसल्स जो मौजूद होंगे फैलोपियन ट्यूब में, उनकी कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये मोटिलिटी आती है। तो इन दो तरीक़ों से ओवम जो है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचा दिया जाता है। दीज आर द टू मेथड्स बाय विच, और द टू प्रोसेसेस बाय विच ovum is transported to the site of fertilization. अब बात करते हैं sperm के transportation की. When we talk of the transportation of sperm, students, we must focus at first. Male ejaculates semen during coitus, which is डिपॉजिटेड इन द वेजाइना. कहाँ पर डिपॉजिट होता है? डिपॉजिटेड या ट्रांसफर्ड इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल टू वेजाइना ऑफ फीमेल. इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या? इंसेमिनेशन. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इंसेमिनेशन. तो मेल गैमीट के ट्रांसपोर्टेशन में इम्पॉर्टेंट स्टेप, मेल इजैकुलेट करता है सेक्सुअल एक्ट कोइटस या कॉपुलेशन के दौरान, और स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफ़र करता है इनटू द वेजाइना. दिस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन. लेटर द इंसेमिनेटेड स्पर्म्स रीच द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बाय देयर फ्लैजेलर मूवमेंट्स. लेटर स्पर्म्स स्विम टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. स्विम करते हैं फर्टिलाइजेशन की साइट की तरफ स्पर्म्स बाय फ्लैजेलर मूवमेंट. किसकी मदद से? फ्लैजेलर मूवमेंट्स की मदद से. सो व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, गैमीट्स जो है उनको बनाने के लिए पहले रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आई, फिर गैमीट्स बने, फिर उन गैमीट्स को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे ट्रांसपोर्ट किया. मेल गैमीट के ट्रांसपोर्टेशन का तरीका अलग था, फीमेल गैमीट्स के ट्रांसपोर्टेशन का तरीका अलग था. Once these gametes are present to the site of fertilization, there will be what? Fertilization taking place. So the next step will be referred to as what, students? It is referred to as fertilization. Second important event, very important. So first event was pre-fertilization event that we learned. So this was the pre-fertilization event that we learned in just few minutes before, where we learned about puberty, gametogenesis and gamete transfer. Once the gametes are transferred, later the process of fertilization occurs. In this process, what actually happens, students? Male gamete fuses with female gamete to produce a diploid zygote. So it happens here what? Process of fusion of sperms and ova. Sperms are male gamete and ova are female gamete to produce a unicellular diploid zygote. What it is formed? A unicellular diploid zygote. This process is called as fertilization. और ये होती कहाँ है? Occurs in ampullary region of fallopian tube. Ampullary region of fallopian tube when we are talking of what? Human beings. ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? एम्पुलरी रीजन. और ये हमने लिख भी लिया है. अब नाउ एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो हमें यहाँ पर ध्यान देना है, लेट अस से स्पर्म कैसा है वो अगर हम देखें, और ओवम कैसा है वो हम देखें, उसके बाद ज़ाइगोट कैसा बनेगा उसको भी हम अगर देखें, तो यू विल ऑब्जर्व कि sperm can have a genotype 22 plus X, or it can have a genotype 22 plus Y, whereas the ovum is always 22 plus X. So let us write it this way. So what you see? Fusion of sperm and ovum to form zygote. Here also you are seeing fusion of sperms and ova to form zygote. If you see a 22 plus X chromosome fuses with X containing sperms fuses with ovum, it forms 44 plus XX combination, which is basically a female zygote.
and it will develop into a female. If a Y chromosome containing sperm fuses with the ovum, it will form 44 plus XY condition, resulting in the formation of male. So this is about fertilization. Once the fertilization completes, post-fertilization starts to begin. So we will focus now on what? Post-fertilization events. What are the post-fertilization events, students? So once the zygote is formed, at first it undergoes rapid mitotic divisions to become an embryo. That is called as what? Cleavage. What it is called as? Cleavage. And what happens during cleavage? Rapid mitotic divisions that occurs in a zygote, hence converting it into a multicellular embryo. This is called as what? This is called as cleavage divisions. And one of these stages of embryo is called as morula. The formation of 8 to 16 cell stage embryo is called as morulation. 8 to 16 cell stage. So let me write it for you people. Morulation. 8 to 16 cell stage is morula, and formation of morula is called as morulation. Formation of morula is called as what? Morulation. Once the morula is formed, it converts into a cyst-like structure called as blastula. That is called as blastulation. So the formation of blastula from morula is called as blastulation. Formation of blastula or blastocyst from morula is called as what? Blastulation. Once this occurs, this blastocyst gets embedded into the endometrial lining. This is called as implantation. So we write the process of embedment of blastocyst into the endometrium. आगे बताएंगे ये क्या है. Process of attachment and complete embedment of blastocyst into uterine endometrium. यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर कंप्लीट ब्लास्टोसिस्ट के धंस जाने की प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन. और इसके बाद एक 3 लेयर्स बनती है, बेसिक जर्म लेयर्स जिन्हें हम कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन, और गैस्ट्रुला के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुला क्या है? Structure with 3 basic germ layers. So formation of 3 basic germ layers, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म. इन 3 जर्म लेयर्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन, और इन 3 जर्म लेयर्स के साथ वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है गैस्ट्रुला. नाउ वन मोर वेरी सिंपल टर्म दैट यू मस्ट हैव कम अक्रॉस इज कॉल्ड एज जेस्टेशन. इसे कहा जाता है पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक एंड फीटल डेवलपमेंट. जिस दौरान ये पूरे जाइगोट से लेकर के डिलीवरी तक का जो पीरियड है उसे कहा जाता है पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक एंड फीटल डेवलपमेंट. और यही क्या है? जेस्टेशन पीरियड है. इंसानों के केस में अगर हम बात करें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9 months, और वी कैन कॉल इट बिटवीन 36 to 40 weeks. Once the fully developed fetus is formed, it is delivered out. That is called as parturition. So let us write the next step, what it is called as parturition. So here we can write it first. Delivery of expulsion of fully developed fetus and placenta. पूरी तरह से बन चुका
बच्चा और उसके साथ में प्लेसेंटा को डिलीवर करने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है पार्चुरेशन. आफ्टर पार्चुरेशन या आफ्टर डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, द मदर usually lactates to breastfeed the child. That is called as what? Lactation. Act of breastfeeding the child, और ये पेरेंटल केयर दिखाने का एक ज़रिया होता है. So in this way all the events of human reproduction completes. So we can revise them quickly. What you see, human beings, students have got certain features and sense of its reproduction. That is, humans are unisexual, male and female are two different individuals which can be distinguished based on external visible characters, hence sexually dimorphic. Humans give birth to young ones, that is VV parity is observed, and as of they being sexually reproducing animals, they do show fertilization which occurs in the fallopian tube of females, hence internal fertilization. The development of the young one, or I should say zygote being developing into the human young one, is without the involvement of any larva. That is direct development occurs inside the womb of female, that is called as internal development. After delivery, the female shows extreme parental care for the baby. Now if we are to talk about the events of sexual reproduction in human beings, so in general sexual reproduction can complete in 3 events: before fertilization, pre-fertilization events, then occurs fertilization, and then comes post-fertilization events. In the pre-fertilization events, at first there is an attainment of sexual maturity called as puberty, and then sexually mature humans produce gametes. Males produce sperms called as spermatogenesis, females produce ovum called as oogenesis. Once these gametes are formed, they are transported to the site of fertilization in humans, which is ampullary region of fallopian tubes. We will be discussing what actually is this ampullary region in the upcoming topics, where we will talk about male and female reproductive system in humans. Now, how are the gametes transferred? So when it comes to sperms, at first human male, by the act of sexual intercourse or copulation or coitus, ejaculates semen which gets deposited or transferred into the vagina of female. This process is referred to as insemination. The inseminated sperms later undergo strong flagellar movement to swim to the site of fertilization, that is ampulla. Now how is ovum transported? After being released from the ovary, the ovum is captured by fallopian tube, which through ciliated epithelium transports it to the site of fertilization. Along with it, the smooth muscles in the wall of fallopian tube causes motility of fallopian tube, peristaltic movement of fallopian tube, which also helps to transport ovum to the site of fertilization. Now, once the sperms and ova are simultaneously transported to the site of fertilization, they fuse to form a unicellular and diploid zygote, which can have a genetic makeup of 44 plus XX, then a female child is born, and 44 plus XY where a male child is born. Now, if we describe these 3 events in detail, pre-fertilization done, fertilization done. Now talk about post-fertilization events. So, in post-fertilization, you see the zygote formed undergoes rapid mitotic divisions that converts it into a multicellular embryo called as cleavage. During cleavage divisions, an 8 to 16 cell stage is formed. The formation of this stage is called as morulation, and the stage of 8 to 16 cell is morula. After morula formation, the embryo becomes a cyst-like blastocyst called as blastulation. This blastocyst embeds into the uterine endometrium completely in a process called as implantation. The entire process continues and gastrulation occurs, during which 3 basic germ layers, which are ectoderm, endoderm and mesoderm, formed in the embryo. This whole process, during which the zygote develops into a human young one, is called as gestation period, occurs in the womb. It lasts approximately for 9 months or 36 to 40 weeks in case of humans. Once the fetus is fully developed, it is delivered out along with placenta. This is called as parturition. The delivered baby is breastfeeded by the mother in a process known as lactation. So this was all about the basic features and events of human reproduction. In the upcoming lectures, students, we shall focus on the primary and secondary reproductive organs in humans, and we will describe in detail
human male reproductive system. For that time being, stay tuned up, keep learning, keep studying. Thank you very much everyone for watching this video. Like, share and subscribe ताकि और भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आप गेन कर सके, आपकी नीट एग्जामिनेशन की तैयारी को एक नए लेवल पर ले जा सके. और याद रखिए, वी डोंट बिलीव इन डांस और ड्रामा, वी बिलीव इन प्योर कंटेंट. सो आई एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स दैट यू ऑल्सो read pure content. Thank you very much once again.